students, today we can see about parafilinear equation in two variables. In that we have now solve some problems in substitution method, right? See here, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. First, we take the numerator fraction is x and the denominator fraction is y. First question क्या है? If fraction becomes 9 by 11. एक fraction है 9 by 11. If 2 is added to both the numerator and denominator, if एक fraction के साथ 2 numerator and denominator में add करेगा तो we can get 9 by 11. वो fraction कौन सा है वो find out करना है. Second में एक numerator and denominator से इसके साथ 2 add करना है. Numerator and denominator added to both the 3 ऐड करना है. फर्स्ट 2 ऐड करना है, सेकंड वन में 3 ऐड करना है. तो सेकंड में 3 ऐड करेगा तो हमको मिलेगा 5 by 6. So now we take the numerator fraction is x and the denominator fraction is y. So regular fraction is x by y, right? Then x plus x by y. फर्स्ट में हमको क्या करना है? If 2 is added, तो numerator and denominator में हमको 2 ऐड करना है. तो see x plus 2 upon y plus 2 is equal to 9 by 11. So हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So 11 से 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2, right? 11 into x 11x plus 11 2s are 22 is equal to 9y's are 9y plus 9 2s are 18, right? Then 11x, we will take this 9y in that side minus 9y plus 22. We will take this 18 plus 18, it's come here, change the symbol, minus 18 is equal to 0. 11x minus 9y plus 22 minus 18, 4. So plus 4 is equal to 0. This is first equation. Then second fraction में हमको क्या करना है? If 3 is added to both numerator and denominator, 3 को numerator and denominator में ऐड करना है तो x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5 by 6. से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3, right? 6x are 6x plus 6 3s are 18 is equal to 5y's are 5y plus 5 3s are 15, right? Now 6x minus a plus 5y को हम आगे लेके आएंगे minus 5 plus 18 a plus 15 इस तरफ आ जाएगा minus 15 is equal to 0, right? Next 6x minus 5y plus 18 minus 15 plus 18 minus 15 plus 3 is equal to 0. This is second equation. Now we will take this second equation. 6x minus 5y plus 3 is equal to 0, right? 6x minus 5y a plus 3 आगे आ जाएगा तो minus 3 हो जाएगा. 6x minus 5y is equal to minus 3, right? Now see here minus 5y is equal to minus 3. a plus 6x को हम आगे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? minus 6x. So minus 3 minus 6x. So y is equal to minus 3 minus 6x. ये minus 5 से हम ये टर्म पूरा डिवाइड करेंगे. So minus 3 minus 6x minus 5. अभी ऊपर ये दोनों टर्म minus 3 minus 6x दोनों सिंबल सेम है इसलिए हम दोनों सिंबल को कॉमन ले लेंगे. तो कॉमन लेगा तो क्या जाएगा? y is equal to minus कॉमन बाहर आ जाएगा अंदर
3 प्लस 6x रहेगा, है ना, अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, उनको रिमेनिंग मिलेगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 6x, 3 प्लस 6x अपॉन 5। इसको हम सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन 1 से 1 में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो 11x एज द इक्वेशन 1, 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. So we will take this 4 in that side, so it's change the symbol, 11x minus 9y is equal to minus 4, right? Then 11x minus 9 into y value, what's the y value? Y is 3 plus 6x upon 5. 3 plus 6x upon 5 is equal to minus 4. Now we will do the cross multiply. 11 5s are 55x minus 5 4s are 20, minus 2 plus minus 20. So then minus 9 into 3, 9 3s are 27, minus 27. Then minus 9 into 6, 54, 9 3s are 9 6 are 54. Minus into plus minus 54, x is equal to minus 20, right? Now here 55x minus 27 minus 54x is equal to minus 20. So 55x minus 54x, we can get x minus 27 प्लस ये minus 20 को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 20 हो जाएगा, plus 20 is equal to 0. x minus 27 plus 20 minus 7 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. So we will take this minus sign in that side, so it's change the symbol. X is equal to 7. Then x is equal to 7, substitute in y is equal to 3 plus 6x upon 5, right? x का वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, y is equal to 3 plus 6x upon 5 में, y is equal to 3 into 3 plus 6 into x का वैल्यू 7 upon 5, 3 plus 6 7s are 42 upon 5, 42 plus 3 45 upon 5, 1 5s are 5, 9 5s are 45, y is equal to 9. Right? It is sum 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Part of their present age. हमको find out करना है Jacob का present age and his son का present age. 5 years के बाद 5 years के आगे अभी 2020 5 years के आगे मतलब 2025 में जैकब का एज उनका बेटा से 3 टाइम्स ज्यादा रहेगा, और 5 years ago 5 years के आगे 5 years के आगे 5 साल के आगे उनका एज कितना रहता था 7 times that of his son. का बेटा से उनका उम्र 7 times ज्यादा था. Okay, now present age of Jacob is x and present age of his son is y, right? 5 years hence, तो 5 years तो hence तो ज्यादा होगा एज, तो present age plus 5 years तो x plus 5 and his son's age y plus 5, right? 5 years hence x plus 5 and y plus 5. Then x plus 5 is equal to कितना, how much times ज़्यादा, 3 times. So x plus 5 is equal to 3 into y plus 5. So x plus 5 is equal to 3 y's are 3 plus 3 5's are 15. So x will take this plus 3y in that side, x minus 3y is equal to 15. ये प्लस 5 को हम आगे लेके आएंगे इस तरफ, माइनस 5 हो जाएगा. सो 15 minus 5 is equal to
10, तो x minus 3y is equal to 10. This is first equation. Second में 5 years ago, 5 साल के पहले उनका एज कितना था? x minus 5, मतलब 5 साल के पहले मतलब एज काउंट होगा, तो x minus 5 is equal to 7 into एज, उनका बेटा का एज से कितना ज़्यादा? 7 टाइम्स ज़्यादा, सो 7 टाइम्स ज़्यादा, तो 7 into y minus 5 है ना, तो x minus 5 is equal to 7 y 7y minus 7 5 35 है ना, x minus 5 is equal to 7y minus 35. अभी हम क्या करेंगे? x minus a plus 7y को इस तरफ लेके आएंगे, minus 7y हो जाएगा, is equal to minus 35. a plus minus y को इस तरफ लेके आएंगे, plus 5 हो जाएगा, minus 35 plus 5. x minus 7y is equal to minus 35 plus 5. So answer minus 30. This is second equation. Now take first equation, x minus 3y is equal to 10. So we will take x को इस तरफ ही रखेंगे, x is equal to 10. ये minus 3y को इस तरफ लेके आएंगे, plus 3y हो जाएगा, तो x is equal to 10 plus 3y. Substitute in equation 2. x is equal to 10 plus 3y को हम equation 2 में substitute करना है. So what's the equation 2? x minus 7y is equal to minus 30. So x का वैल्यू कितना? x value is 10 plus 3y. 10 plus 3y को हम x में substitute करेंगे, 10 plus 3y minus 7y is equal to minus 30, right? अभी 3y minus 7y क्या आएगा आंसर? 3y minus 7y minus 4y. ये प्लस 10 को हम आगे लेके जाएंगे, क्या होगा? minus 10. So minus 30 minus 10, right? minus 4y is equal to minus 30 minus 10, answer minus 40. अभी ये भी minus 4y है, minus 40, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमको 4y is equal to 40. सो हमको y वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो y को इधर ही रखेंगे, is equal to 40 अपॉन ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो डिवाइड कर देगा 40 को, 40 अपॉन 4. सो 4 1s are 4, 10 4s are 40. सो y is equal to 10. नाउ अभी हमको x वैल्यू फाइंड आउट करना है. सब्स्टिट्यूट इन x is equal to 10 plus 3y. अभी ये y वैल्यू is equal to 10, इसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, x is equal to 10 plus 3y में. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, x is equal to 10 plus 3 into y का वैल्यू 10. सो 10, 3 10s are 30, 10 plus 30 is equal to 40. Okay, thank you students.